Hello guys, you are watching English with Hira, and let's dive in my content without wasting any kind of further time. Now, I am going to talk about the things we was doing in schools, the things we was running in schools, what was running there in the school. हम बात करेंगे कैसे हम स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में क्या होता था पढ़ते वक्त. We was going to school so much excited and excitedly, and after reaching school, so we were sitting on the bench and class started. I was sitting and you was sitting. Teacher is teaching by the whiteboard, by the blackboard, and we were listening, and our just body ऐसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा जैसे लगता ठंडी पड़ गई. कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है हमारे बॉडी में. There is no activities in our body, in our muscles, and our mind get loose. Too much loose, and the word is coming here and going there, eyes is wide open like that, and again teacher is saying that, teacher कह रहा कि सब लोग सुन रहे हो? Yes sir. Yeah, sometimes we are napping. Okay, that kind of activities we was doing in schools, and because of that activities we are not able to read, write and speak. Somebody are able to read, write but not able to speak this language. कुछ लोग बोलने के एक्टिव तो नहीं है, बोलने के लिए एक्टिव नहीं है, बट कुछ लोग रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं क्योंकि वो लोग कॉन्शियस थे. बट टीचर इंग्लिश में टीच करके हिंदी में टीच करता था तो वो लोग एबल नहीं बोलने के. बट वो लोग जो लोग सोते थे, ऐसे नेप लेते थे, उनकी बॉडी शिथिल थी. उसका मैटर ये था कि जब हमारी शरीर जब बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, जैसे हम लोग ढीला छोड़ देते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है. इट इज़ स्लोली गेट अनकॉन्शियस एंड देन वी गेट स्लीप. उसके बाद हम स्लीप हो जाते हैं, सो जाते हैं. तो स्कूल में हम लोग वो करते थे. मुझे ये कहना है कि जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो अपनी बॉडी को मूव करो. ओके, दौड़ो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, एंड टहल करके आप इंग्लिश को सुनना करो अपने कानिंग में. अगर अपने कान में आप टहल के नहीं सुनते हो तो दैट वुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. इट विल नेवर हेल्प यू टू स्पीक एवर. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. द वर्ड इज स्टकिंग, नॉट कमिंग ऑन टंग. For further informations, be with me. I will meet you next video. Watch, share, subscribe and support one farmer. एक किसान का आप लोग सपोर्ट करो, वॉच करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करना ना भूलो. थैंक यू सो मच.